Hi, Varsha. Hi, hi. Wow, very punctual. Yeah, I thought I was late. I'm late. No, no, cool. I usually start them, I think 5-10 minutes earlier, but I think I forgot to tell you. I'm so sorry. I was eagerly waiting for it. Nice to see you finally. Yeah, thank you so much for doing this. I am glad because there are a lot of people who will be like, "नहीं हमें नहीं करवाना," and I'm like, "अरे okay." Acha, seriously, Yeah, yeah. I wouldn't miss this chance. No, but people I think are a little reluctant because especially when I say that I'll do it publicly, people are like, "अरे बाप रे पता नहीं क्या बोलने वाली है." So I'm like, "Okay, no, that's not how it works." Okay, so let's get started. So I'm Yeah, going to. So I have a list of notes also. So what I'll do is once we are done, I'll send you that file also on an email so that you'll have it for reference. And then if there's great. anything else you want to ask after that or after the session for the next 1-2 weeks and all, you can always write back to me on email. All right. Okay. Great. So, okay, shared screen. So these are the notes, but let me just go here and start look at your profile only. Okay. Uh, and okay. So yeah, the first thing is obviously you should change the psychotherapist. The handle definitely needs to be something else. So can you see this? No, you can't. Okay. Yes, I can. No, the notepad file. Were you able to see that? No, no. Now I think you'll be able to see. Okay. So this is the. Uh, so yeah, you definitely need to change the handle and the TT at the end. It doesn't. It doesn't look like you're actually a psychotherapist. ऐसे लगता है किसी ने handle बना लिया है. You know what I mean? Acha. Yeah. Especially, if someone's coming to your page for the first time, they'll be like, what is this? If it was just the psychotherapist and correct spelling, it still could have worked. I was not getting that handle name, Obviously, so it was already taken. yeah, you're Ah, not going to get that because I mean, everyone early mover advantage, etc. Even I got my handle, I joined Instagram quite late. But luckily, I think the person who was using the handle, they stopped using it for a while. And for a very long time, I was using nena.co as my main handle, and I didn't have Nena. But hmm. then I did an assignment with Instagram India, and then I asked them, I said, is there a way, can we find out if the other one is even being used or not? Because I had been seeing that this handle doesn't exist anymore. And it didn't exist anymore. So the team was able to give it to me, which is why I have Nena. So unless you actually have contacts and all, and that handle is available, which in most cases it is not, like I'll get DMs once in a while saying, "Oh, when are you selling your handle?" And I'm like, "I'm not selling it." Okay, so All right. these are some of the suggestions. Hmm. Best to use your name. Now, I don't know if Varsha Tekwani will be available, but you can see whether Varsha.Tekwani or Varsha Tekwani or things like Varsha.Psychotherapist or Hmm. Psychotherapist.Varsha, right? Or even something like V Tekwani or Varsha T or these other examples like Tekwani Therapy, for example. Because if you're Hmm. only going to be using your Instagram for business, then I Yeah. think this makes sense where you can have one word which is therapy and one word which is your name. Or there Hmm. are also examples like Varsha listens. Like you're a therapist, so your technically the job is like you listen and then you engage or sit with Varsha or something like that. Right? So you I was thinking. yeah. I was thinking I was thinking since a long time about the name, so I came up with this name, the Millennial Therapist. So will I this? think there's somebody else using that, but like you can try a different combination of like dots and stuff to see aata hai ki nahi. But I think that is still very generic. I would still suggest that you use something that has your name in it because I mean there will be a lot of Varshas and a lot of Tekwanis and probably even some Varsha Tekwanis, but there's probably just one Varsha who's a psychotherapist. Like Right. I mean I'm sure there must be more in India, but like sub Instagram pe nahi honge. And it's an easy way to be identified, I think, because imagine you have a client, right? And if they came to you via Instagram and then they find that, oh my god, Varsha was amazing and I need to recommend this to my friend who might need it. So when they recommend it, if it's Tekwani therapy, it sounds like you're a professional, and it doesn't necessarily sound like your it doesn't give away your experience, it doesn't give away your age, it doesn't give away your gender. So there is no first bias. So people will be like, okay, take Vani therapy, let me come to Instagram and let me see, and then they will look at the other things. But there are some people who will be like, no, I don't want a woman, or if the name is like this, they might think you're somebody who's young, or
millennial therapist, I mean, I'm 40, I might be like, I don't want a millennial therapist, you know. So it creates a judgment pehle se hi. And a lot of, you know this, right? The judgment we don't even realize we're making. Huh. The handle is the most important part, obviously. Second, let's go to your profile photo. Acha, by the way, you can ask me anything and stop me in the middle and be like, acha, by the way, I have a question. So aisa kuch nahi hai, theek hai? And if we go over by 5-10 minutes, that's also not an issue at all. So your profile photo, I love. It's perfect. You're smiling, you're looking, it's your face. So excellent. Usko kuch karne ki zarurat nahi hai. At some point, every year, 2 years or something, you might think of updating it because our faces change and you might want to keep it, you know, true to who you actually are or what you look like right now. So 1 year, Right. 2 years, maybe you can change that. So the second thing is, okay, I'll go. Every time if I have to change the screen, how does it look? Can you see your, acha, you can't see. Okay. Okay, the second thing is your bio. Let me see if I can share both the screens here. I don't know if you can see it. Okay. Can you see the notepad and the thing? No, na? I just can see my profile. Your profile. Na? Chalo, theek hai, I'll switch to it and baad mein we'll see. Okay. So Varsha Tekwani, your name is fine. But I would suggest that because this is 30 characters, you should use something more. So maybe you can say something like Varsha Tekwani, psychotherapist. Here you can say that. So Varsha Tekwani, colon, psychotherapist. Or Varsha Tekwani, I mean, I don't know what kind of therapy you do, but it would be relevant to mention that also in your bio. You know, I whether do it's CBT therapy, cognitive behavior therapy. so CBT, I mean, obviously don't write CBT, right? Cognitive behavioral therapy. Because I think dheere dheere, especially in India, it is growing now where people are looking for therapists, etc. But we don't know how to search for a therapist, or we don't even know, you know, ki kis term se hame search karna chahiye. But I'm saying, you know, one, they'll come to, okay, Tekwani therapy. Two, then they'll see, okay, Varsha Tekwani, psychotherapist. Then they'll see, okay, cognitive behavioral therapist has worked with 80 patients so far and counting, or whatever, something like that. So keep it very professional. So when you say online counseling platform providing mental health therapy, so this sounds redundant because you are not the platform, right? Instagram is the platform. So you shouldn't be saying platform because उसमें लगता है जैसे आप बोल रहे हो कि आप platform हो. You're not the platform, right? So online counseling providing mental health therapy. So I think counseling and mental health therapy is kind of similar. So you can do away with counseling. So what Okay. you, and DM for free initial consultation is great. Initial ki spelling correct kar lo. I think at least bio mein, if you have a spelling error, then it's, you know, it doesn't look good. It doesn't look Yeah, like professional. I know this. I know we don't pay attention because we've written it, so we like लिख दिया, publish कर दिया, and then you're like, oh shit, ये तो बाद 4 महीने बाद somebody's pointing it out, and you're like, oh no, I missed it. Very common. So I've also done it. Yeah. Yeah. So I have written all this in detail also, that, you know, bio mein what all you can change, etc., which is there in the notepad and you can see. Then when you say trying to make mental health affordable, I don't think you should be using the word trying. You're either doing it or you're not doing it. So you can say, you can, you know, you have to be assertive. So you can say making mental health affordable. You see what I mean? Makes sense. Yeah, it's Yes. a lot more assertive. See, with any online profile, the problem is that we are not there to talk to someone in front of us. So we can't convince them, right? So the only thing that is available to us that will convince someone to follow us is when we say we establish authority. And especially as a professional, I'm like, I'm a therapist making mental health affordable. And then you can say things like certified mental health therapist, because these days there are a lot of people who are like, oh, I'm a therapist, and they have no certification, right? Right. So for someone who is coming to the profile and seeing, how do I know that you're the real deal? See, in your profession, correct me if I'm wrong, you can't do customer testimonials, right? As in, no, without their permission, we Without their can't. permission. Ha, and a lot of people won't be comfortable saying ki, ha, you can use my testimonial. So that's going to be a problem. So how are you going to let people know that you are actually the real deal? So one of the things you can say is, oh, certified mental health professional. Where is your certification from? Cognitive behavioral therapy.
treated 500 patients and counting, and making mental health affordable, and then DM for free initial consultation, for example. So this DM for free initial consultation should ideally come right at the end. सबसे नीचे आना चाहिए आपके bio में, because then that's called the call to action, where somebody read it and till then they're convinced and they're like, अच्छा चलो DM करते हैं, एक free initial consultation मिलेगा, वो last में आना चाहिए. हाँ. Cool. So right. वो रखा भी इसीलिए था कि जैसे उनको जो भी डाउट्स हो तो वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज फॉर इट कि आपको थेरेपी रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है. हाँ बिल्कुल. हाँ, because see, even for me, when I was like, okay, what if I want to look for a therapist, especially during lockdown, anxiety was maximum, and insomnia and stuff like that. I said, how do I even start looking for a therapist? And then when you do search for therapists, you'll see, it's 2,000 rupees for an hour ka session. And I'm like, I don't even know who this person is. How can I just open my entire Pandora's box and also pay them? So there's always this thing in your head. So you should be establishing authority in your bio where it's like, yes, I'm a professional therapist. So certifications, what type of therapy, and be a little welcoming, which is your DM for free initial consultation. And then you can decide ki ek baar DM kar diya, uske baad, sorry, but this is how much I charge, or whatever. That is then up to you. Cool. So far, so good. Any questions? So assertiveness, the reference of the my certification, and so assertiveness, yeah. So yeah, I've shared all this in the notepad file also, which I'll share with you once we're done. So okay, so but I'm still a little confused about using my name. मुझे ऐसे लगता है ज़्यादा convincing नहीं लगेगा. मतलब मुझे ऐसे काफी suggestions मिले कि नाम use करो, पर पता नहीं कुछ ऐसे. नहीं, आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि convincing नहीं लगेगा? क्योंकि कुछ ऐसा नाम यूज करना जिसका कुछ पर्पस हो, लाइक तत्व और संपर्क, ऐसे कुछ. No. See, the thing is, this is your introduction to the world. If somebody sees tattva, they have no idea what is tattva, right? And one of your questions was that how do you reach out to the rest of India? How do you get more clients from India, etc.? See, the point is you're online. Being online means that your audience is international. So you don't have to think कि सिर्फ इंडिया में ही आपको काम करना है. So उस point of view से, if you're using tattva, then you're basically excluding the rest of the population. They have no idea what bloody tattva means. You know what I mean? It's always, as a professional practice, I highly recommend that you use your name. Like I said, you could use Tekwani psychotherapy. And tomorrow, you establish abhi to khair during the pandemic, you don't have a clinic, you can't really meet clients in person. But eventually, if you're looking to do that, and on ground आपका अगर ऑफिस है, उसमें आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो आप बोर्ड पे क्या लगाओगे वहां पे आप तत्व साइकोथेरेपी लिख सकते हो, बट फिर भी पीपल विल नो यू एज, अच्छा वर्षा के पास चले जाओ. किसी को बिजनेस का नाम याद नहीं रहता. हाँ. आपका नाम याद रहेगा. हाँ. So I have a clinic, पर अभी तक I haven't named it. So they approach me through Instagram only. मतलब मेरे totally clients Instagram के through आते हैं. Very good, बहुत अच्छी बात है. हाँ, मेरे को भी जो I sell my brooches or I sell my masks and all, मेरे को भी clients Instagram से ही आते हैं. They'll go to my shop and they'll buy it. So, but see, they know me as Naina. Otherwise, when I started 16 years ago, I started as kind of like a photographer or a blogger. अगर मैंने लिखा होता Indian blogger, अभी तो दुनिया भर के भरे पड़े Indian blogger. Which Indian blogger is this? You know what I mean? Right. It establishes your name, and then over the next 5 to 10 years, it will build on that. अगर आप अभी तत्व psychotherapy use करोगे, तो फिर, if you plan to have other psychotherapists under you, who that you plan to hire, etc., even then as a practice, like doctors, right, they use their name. When you're saying, so especially from the medical field, I would suggest that you should definitely use your name, because I don't know a doctor they might have a practice, but मुझे उनका वो clinic का नाम नहीं याद रहता. मुझे doctor का नाम याद है. Yes. So one of my pulmonologists, his name is Shivanshu Goyal. I don't know him as Shivanshu. उसके clinic का नाम अभी मैंने थोड़ी देर सोचा, मुझे याद है Salubrity Clinics है, but वो किसको समझ में आएगा Salubrity क्या होता है? Right? So I would suggest that you use your name and a combination karoge, to it will be easier, because it immediately. So for example, if I had used Naina.photo,
So it's like, oh, photographer, set, done. कुछ करने की जरूरत नहीं उसके बाद. But my problem is that I do 50 other things. So it was best for me to go with Naina. Luckily, I got that name also. And then उसके नीचे then I do a lot of other things. And, you know, then you can experiment and see कि product का क्या नाम रखना है. Maybe you do a 3-day workshop for people who don't know what therapy is, introduction to therapy or something like that. Then you call that product something else. But your main page is Tekwani Therapy, for example. And वो तो सबसे जरूरी है. Bio आए तो सब उसके बाद में आता है. But your first thing is your identifier. Right. Yeah. So I'll use this. Okay. Yes, makes sense. So, okay. So all this we've already addressed. And DM for free initial consultation. Eventually, when you're famous, you won't have time, huh? Yeah, but still I want to keep this as free because, and also I want to start Saturdays for free therapy because there are many students who come up और वो बोलते हैं कि मैम हम इतना afford नहीं कर सकते. So मुझे one day of the week मुझे free ही रखना है, तो वो भी मुझे in fact start करना है. So see, उसके लिए मैं आपको एक आइडिया दूं. आपको अपना न्यूज़लेटर स्टार्ट करना चाहिए. एक आप अपनी मेलिंग लिस्ट बना लो और उसमें जैसे मैंने ये वाला करा ना कि फ्री वाला जो गिव अवे था वो न्यूज़लेटर के थ्रू ही करा था, राइट? एंड आई हैव ऑल दीस सब्सक्राइबर्स एंड आई एम लाइक कोई भी गिव अवे होगा तो वो पहले न्यूज़लेटर में आएगा और न्यूज़लेटर वालों को पहला चांस मिलेगा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. तो मेरे न्यूज़लेटर में अभी कुछ 400 लोग हैं, ज्यादा नहीं है. एंड जनरली वो उन 400 लोगों में ही खत्म हो जाता है. लाइक मेरे को ये टाइम ही नहीं मिलता कि मैं इंस्टा पे पोस्ट करके बोलूं ओ बाय द वे आई हैव अ गिव अवे. तो सैटरडे को भी अगर आप फ्री कंसल्टिंग करोगे यू विल हैव लिमिटेड स्लॉट्स, राइट? यू विल डिसाइड कि अच्छा सैटरडे को मैं 4 ही स्लॉट करूंगी या जितने भी. तो वो स्लॉट अगर आप न्यूज़लेटर स्टार्ट करोगे उससे क्या होगा, मान लो आपके न्यूज़लेटर में 4000 लोग हैं इवेंचुअली. अब वो 4000 लोग उसके लिए आने की कोशिश करेंगे पर आप स्लॉट तो 4 ही दे पाओगे. लेकिन उसमें से 4000 में से 4 और ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे यार कर लेते हैं थेरेपी, बहुत टाइम से सोच रहे हैं, वर्षा सीम्स लाइक अ नाइस पर्सन, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग, सो यू विल एक्चुअली गेट 4 clients also, right? And you'll have, you know, these days attention spans online are anyways very low. And अभी पैंडेमिक की वजह से सभी लोग ऑनलाइन है एंड सभी लोग इट्स लाइक अनफॉलो, ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, ये हटा दो, ये हटा दो. सो हाउ आर यू गोइंग टू रीच आउट टू पीपल? लाइक मेरे भी अभी इंस्टाग्राम पे 49,000 फॉलोअर्स हैं. मैं जब कोई पोस्ट डालती हूँ जो बहुत पॉपुलर होती है तब मेरे को उसमें 400 लाइक्स आते हैं. सो यू कांट, आई एम नॉट इवन रीचिंग, दैट्स नॉट इवन व्हाट 10% ऑफ माय ऑडियंस, राइट? सो इट्स you can't reach everybody like that. लेकिन अगर आपके पास न्यूज़लेटर है, जो अभी सिर्फ 400 लोग हैं मेरी न्यूज़लेटर में, लेकिन मैं जब न्यूज़लेटर भेजती हूँ मुझे पता है कि वो 400 लोग एट द वेरी लीस्ट उसका जो सब्जेक्ट लाइन है वो तो देखेंगे. फिर 400 में से around 300 people tend to open the emails. So there are 300 people who are seeing those emails, which is more than what my Instagram posts get. So for this, I would suggest, and especially because, you know, yours is a very involved field. It's not as simple as saying, oh, come and download my PDF, right? It's about actually people who want to do a free session of therapy to understand कि क्या होता है, क्या उनको help मिल रही है कि नहीं मिल रही है, and then they can consider whether they want to do a paid consultation or not. So it's even if you have a very small list of just 30 people to start with, I think it will help you immensely in the long run if you have to grow your client base. Okay. Newsletter. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. You must think about it. ठीक है? Then yeah, I've included some examples of some of the therapists which, you know, which I mean I've seen people repost them and I've seen उनके posts and all, and just to show you कि generally industry में क्या होता है. आपने भी एक का share करा था link, ये इनके उनसे कहीं ज़्यादा follower हैं, and you know look at their handles, notes from your therapist, then किसी का नाम है नेद्रा तवाब, फिर किसी का है sit with wit, फिर the holistic psychologist, then Liz listens or brown girl trauma. So you can decide, like brown girl trauma is very specific कि वो brown community में ladies के साथ और trauma के बारे में therapy करते हैं, right? तो अगर आपने अभी तक decide नहीं करा है कि आप किस चीज के बारे में करने वाले हैं, you can leave it a little open ended, because as somebody who practices CBT, you can do a bunch of things. It's not specific कि एक ही टाइप की थेरेपी है. तो इसीलिए again Tekwani therapy sounds very like, oh, you know, sounds somebody who's very experienced, at least to me. So you can like it?
Yeah, I like it. I like it. Like, you know, right now, especially with the psychotherapist जो आपने डाला हुआ है, उससे तो कुछ भी अच्छा होगा. उसको तो please change कर दो. नहीं, I'm going to buy the domain also. मुझे वेबसाइट भी बनाना है, इसलिए मुझे वो एक नाम चाहिए. I was searching for the name. Yeah. So you should figure out what it is, and ideally on every platform you should have that handle. And again, even in the notes I've written this, and this is not specific to Instagram, but you should also look at Twitter and YouTube. So you should be doing more videos. There is a uska bhi maine isme example dala hua hai. There is a brand called Story Brand, and they've got nothing to do with therapy, but they have these daily business tips. So क्या करते हैं, जो उनका CEO है, वो उसको एक दिन बिठाते हैं 4 घंटे के लिए, और उस 4 घंटे में वो 40 वीडियो शूट करते हैं 1-1 मिनट के, और वो हर 10 वीडियो के बाद कपड़े चेंज करता है. So it looks like अलग अलग वीडियो बन रहे हैं. So and then they post one video every day, and they have a newsletter and people click on that. It's a 1-minute tip. This is what you should do for X. So stuff like that you should explore for sure, because especially as a therapist you are talking to people, and Instagram में सिर्फ static post करने से वो feeling नहीं आती, connection नहीं बनता है. तो इसीलिए आपको अपनी feed में भी मेरे हिसाब से खूब सारे videos डालने चाहिए. और YouTube के लिए आप वीडियो बनाओगे, जरूरी नहीं कि वो 50 मिनट का या 15 मिनट का वीडियो होना चाहिए, 1 मिनट का भी चलेगा. And then the same video you can use on your Instagram main feed. You can post it on IGTV. You can even post it on stories split as 15-second videos. You can, you know, post it on your Twitter account. So Instagram, yes, but I would also suggest कि आप Twitter पे भी एक प्रोफाइल बनाओ, और वही आपको हैंडल मिले तो बहुत अच्छी बात है. And similarly एक YouTube चैनल भी आपका होना चाहिए. मतलब that's just general business advice. हाँ, नहीं, मुझे सही लगा. Actually होना चाहिए. Twitter is really useful. Twitter especially आपके प्रोफेशन के लिए बहुत यूजफुल है. ठीक है. This one, the holistic psychologist, इसके highest followers है Instagram पे. Psychologist में. See, followers is one thing, but उन followers में से आपके actually paid clients कितने हैं? असल बात तो वो है. ठीक है ना? Follower, अगर आपको, you know, if you just want to buy followers, then you can just buy followers. You know what I mean? You can just get bots and buy like 10,000 followers, and then फिर वो 4 दिन बाद 10,000 का 9,000 हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा. वो सब भी कर सकते हैं, but कोई point नहीं है, क्योंकि आपको असली followers तो मिल नहीं रहे हैं. असली followers तो आपको time लगता है, and feed बढ़ाने में बहुत time लगता है. So also one feedback about your feed is that now especially I see a lot of reposts that you reshared a lot of other people's content and videos and stuff. I would suggest that if you want to reshare that, you should post that only in your stories, not on your main feed. Your main feed should be your brand. So anything that you have made, it has to be your content. And even if you're working with clients, मान लो somebody who's really benefited from you, you can always politely ask them that, is it okay if I share a testimonial? Would it be okay? And maybe you don't even need to use their name, but get their testimonial and, you know, say that, oh, this person was with me for therapy for 3 months and this is what they had to say. Something like that. I shared the feedbacks and highlights. No, I would suggest that you get a nice text editing software. Like you can try Canva है, Adobe Spark Post है, और उसमें ना अच्छे font से लिख के और वो post करो and say ये मेरे client ने ये बोला है. Because I think main feed पे वो दिखता है and it's not just, it's there for a while. And obviously, eventually, I would suggest that you should have a website where you have a collection of everything, because Instagram is just scroll करा खत्म हो गया. 24 hours देखा चला गया. Nobody is really going to scroll through your entire feed. You know, if somebody comes to your page on their phone, they'll only see the top 2 or 3 lines of your photos anyway. And not everyone's going to scroll through for the last 2 years what you've been posting. So a website is very important where you have a testimonial section. And if anybody's interested, they just go to testimonials and you're done. And then you can have a testimonial section in your story highlights. हर जगह डाल दो. ये नहीं कि बस एक जगह डाल के और छोड़ दिया. So I'm not saying कि stories में मत डालो. So everything should be kind of connected to each other. ठीक है? Stories, again, frequency on the feed. Please don't post 3 times a day. Once a day is enough. Okay. Because I would suggest that you should focus on the quality of the content instead of trying to post 3 times a day, which is a lot of work. मेरे से तो दिन में एक बार भी I'm like क्या post करूँ? You know, what is relevant? And I have so much content. Like I save a lot of because I'm a photographer, I save a lot of my images on my Google Drive folder. At this point, I have about 900 photos on that from 2012. But, you know, it's not
हर बार throwback थोड़ी डाल सकते हैं. So you have to be like, अच्छा आज क्या हो रहा है? So it's a struggle, and what happens is the more I post, I feel that the quality goes down. So once a day, keep it as relevant to, you know, पिछला एक हफ्ता or the next 1 week or what's going on with you right now. हाँ, yeah. ठीक है. Okay, so your specific questions that you had asked, I think I've answered pretty much most of them, right? Yeah, I mean, how can the account look more appealing? Better quality photos and original content as much as possible. Even if it is a quote that you're resharing, I would suggest एक वो text editing app में खुद जाके बनाओ और उसमें नीचे लिखो टेकवानी therapy. You understand what I'm saying? And you can give credit कि किसका quote है, but उसको brand करने के लिए टेकवानी therapy और वर्षा टेकवानी or whatever you decide. Because then it's like, अच्छा ये इन्होंने बनाया है. And even as a viewer, when I come to Instagram these days, there's so much nonsense on Instagram. So when I see it, I should be like, okay, this person has put in effort. You know, ये इन्होंने काम करा है. So that also adds to your credibility and establishes your authority. So the course which I have made, and also with my name on the right corner. Yeah. So I don't know. Maybe you're sharing a quote from Freud or something. So you'll say, अच्छा quote है, उसके नीचे Freud, and then on the edge you say टेकवानी therapy. है वो Freud का quote. So I'm not saying that you say that it's your quote, but you should brand it because you designed the graphic, right? So you made it that way. So then I shared a lot of quotes which I made, पर वो थोड़े videos के नीचे हैं. What do you think about that? I've seen that. That's fine. That's good. But इतने frequently सिर्फ quotes मत share करो. You know, maybe see if you're posting 3 times a week, then I would say 1 quote you can use. But if you're posting 7 times a week also, I would say 1 quote only. Like make it regular कि Monday को वर्षा के account से quote आता है. या Tuesday को वर्षा के account से कोई common problem आती है. Insomnia, do these 3 things. Something like that. Wednesdays को वर्षा posts a video where she explains the meaning of this one term which is used by therapists, which normal people don't understand. Thursday को वर्षा talks about किस टाइप की प्रॉब्लम के लिए किस टाइप की थेरेपी करानी चाहिए. Friday को वर्षा shares a photo of her sitting with chai and saying, hope everyone is doing fine in the lockdown. You know what I mean? It's like a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and then Saturday, Sunday you can decide not to post also. Chutti maro. Or Saturday ko, for example, if you do a free session, you know, like I'm doing a free session right now. So then you can ask for their consent and say, is it okay if I post this on my IGTV? And if you do 2 sessions on Saturday, then you have 1 IGTV for Saturday, 1 IGTV for Sunday. Amazing. Good ideas, no? Amazing idea. Nice. I'm so glad I can see your face and I'm like, good, this is good. I like it. Seriously, it will boost like something. Yeah, but see, the problem is, you know, a lot of us get very excited that we have to post on Instagram. And then when we start posting, we realize ki baapre, this is too much work. So if you decide a schedule ना कि मेरे को Monday को ये करना है, तो आप फिर एक दिन बैठ के आप 3 महीने का कंटेंट बना सकते हो कि ये कोट हर Monday को एक कोट जाना है. So 4 quotes in a month, 3 months, 12. So you need to find 12 quotes, उनको डिजाइन करके रख लो और हर Monday उसको पोस्ट कर दो. तो हो गई सेटिंग. Ab things like IGTV are live, right? So you will do a session, and if the person has said, okay, fine, you can use my session on your IGTV, then that you can post right away. Like today, once this thing is done, then I'll post it on my IGTV by evening. And you know, it's for me also, see, the giveaway for me works because there are a lot of people who are interested in my paid Instagram profile review, but they don't understand कि इसमें होता क्या है. And I have talked about it कि उसमें क्या होता है. मैंने उसके बारे में लिखा है. Product description page पे भी उसके बारे में लिखा है. But still, people don't know कि क्या है उसके अंदर. अब मैं ये वीडियो डालूंगी. हाँ, it's a reference point that I'm talking to a real person. And you know, you're getting real time feedback. आप मुझे बोल रहे हो नहीं मुझे वो पसंद नहीं है, नहीं ये आइडिया अच्छा है. So ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चर्ड है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए कि तुमने ये बोलना है. ऐसा कुछ नहीं है. See, I'm giving you feedback from whatever my experiences, and you're responding based on whatever your experiences are, which are obviously different. So then it works for me in that sense. Maybe 4 लोग देखेंगे वो एक बोलेगा चलो मुझे भी ये सेशन करवाना है. So that it works for me. It's a marketing thing, and of course it's a content thing.
Yeah. So Naina, but do you think that pattern is doing fine? जो नीचे has started 2 quotes and a photo in middle. See, 2 quotes and a it's fine. ऐसा कुछ नहीं है कि गंदा है या बुरा है, ऐसा नहीं है. But you But know, I can try something. हाँ, you'll have to try and see what works because not everyone's Yeah. going So to. this pattern. हाँ, तो एक आपका फोटो लाइक आई सेड एक चाय पी रहे हो आप बैठ के, ये वाले. So these are fine, but इतना ज्यादा नहीं is what I meant. And don't do this ये 1 2 3 वाला, ये कोई जरूरत नहीं करने की. I know a lot of people do this, but honestly इसका कोई फायदा हाँ. नहीं है. बस वो नहीं. दिखने में हाँ. थोड़ा ठीक ठाक लगता है कि it is consistent. So अगर मैं अलग-अलग फोटोज डाल रही हूँ तो that's okay. Like I got this feedback कि आजकल सब लोग ऐसे ही डाल रहे हैं, so ऐसा ही डालना है. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. देखो, आपको जिसमें भी लगता है कि आपको एंगेजमेंट ज्यादा मिल रही है और जो चीज आपको करना पसंद है, क्योंकि ऑडियंस को भी सामने से दिखता है कि सामने वाला कितना एफर्ट डाल रहा है, उनको भी मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है. एंड इफ दे कैन सी दैट यू आर नॉट एंजॉयिंग इट, दे आल्सो लूज इंटरेस्ट. So if this is something that you enjoy doing, then I would suggest that you continue doing it. But ये after a while ये बड़ा boring लगता है देखने में कि अरे ऐसा लगता है अभी परसों तो दिखा था अभी फिर दिख रहा है feed पे when you see it on your app, not here. Here it looks like nice and put together and everything. But if you're on the app, then it's like ये अभी तो देखी थी same photo है. So try to vary it. Which is why if you do the 3 months वाला thing ना, then आपको अपने आप ही लगेगा कि अरे तो सारे एक जैसे लग रहे हैं. हाँ, true. But I like these जिसमें आपकी फोटो है, आप बैठ के कहीं चाय पी रहे हो, कहीं पे आप योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, डालो. Because it is your way of telling your viewers that I am a normal person and I also have to live life and use tools like meditation, etc. So it's a nice way to connect with the audience. And obviously, like slightly better photos where your face is not so dark, like दिख ही नहीं रहा है. थोड़ा सा उसका editing, and especially if you have an amazing phone, which you already do, you have the iPhone X. So learn how to edit a little bit. Lightroom का जो free version है वो try करो. Adobe Lightroom. They have a free version and amazing editing होती है उसमें. Just play around with it a little bit. Cool. So, do you have any more questions? So, मेरा बेसिकली यही था कि मुझे जैसे मेरा बिजनेस है तो जनरली कुछ थेरेपिस्ट होते हैं जो अपनी सिटी में ही काफी फेमस होते हैं. मेरा ज्यादा ऑनलाइन ही हुआ है. अगर कोई पहचानता है तो थ्रू ऑनलाइन ही. तो आई नो कि मुझे क्लाइंट्स यहीं से मिलने वाले हैं और क्लाइंट्स एक्चुअली सिर्फ सूरत से हैं भी नहीं. आई एम फ्रॉम सूरत, गुजरात. तो क्लाइंट्स कुछ इनफैक्ट कोई न्यूजीलैंड से है, कोई कनाडा से भी है, कोई इंडिया के अलग अलग पार्ट से भी है, बेंगलोर से. तो मैं देख रही हूँ कि मुझे हर जगह से मिल रहे हैं, तो मुझे वो और ज्यादा फायदा है. और आई नो कि मैं इसी चीज पे डिपेंडेंट हूँ. मतलब नॉट थ्रू सोशल सर्कल और समथिंग लाइक दैट. इतना सोशली मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, पर मैं ज्यादा ऑनलाइन इन्वॉल्व हूँ. सो मुझे और थोड़ा इससे बिजनेस या मे बी क्लाइंट्स क्रिएट करने हैं. नहीं तो आप क्या बोल रहे हो कि आप इंस्टाग्राम पे डिपेंड नहीं करना चाहते कि सिर्फ यहीं से क्लाइंट्स आए? नहीं, मैं कह रही हूँ मैं इस पे ज्यादा डिपेंडेंट हूँ. हाँ, तो आपको मैं कह रही हूँ मैं काफी ज्यादा इसी पे डिपेंडेंट हूँ. नहीं तो ठीक है, बट डिपेंडेंट होना भी नहीं चाहिए. बिकॉज देखो, आप एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस भी कर रहे हो, राइट? कल को अगर इंस्टाग्राम बंद हो गया तो क्या करोगे? तो इसीलिए वन ऑफ द थिंग्स इज कि आपकी न्यूज़लेटर और मेलिंग लिस्ट अगर है, उससे आपके पास लोगों की ईमेल आईडीज हैं और वो लोग कहीं नहीं जा रहे हैं. ज्यादा से ज्यादा वो अनसब्सक्राइब करेंगे, विच इज फाइन. बिकॉज अनसब्सक्राइब वही लोग करते हैं जिनको आपके न्यूज़लेटर से वैल्यू नहीं मिल रही है. और आप काम भी उन्हीं के साथ करना चाहते हो जिनको आपके कंटेंट से वैल्यू मिल रही है. और न्यूज़लेटर में वो बिल्कुल आपको दिखता है. तो आप इंस्टाग्राम पे ही अपनी न्यूज़लेटर बिल्ड करना शुरू करो कि हाँ, सब्सक्राइब टू माय न्यूज़लेटर. मैं हर हफ्ते एक न्यूज़लेटर डालती हूँ, उसमें मैं क्या बातें करती हूँ उसके बारे में, उसका कंटेंट बिल्कुल अलग होगा इंस्टाग्राम से. बट आप स्टोरीज में शेयर कर सकते हो कि गो टू tekwani.therapy.com/newsletter एंड साइन अप टू माय मेलिंग लिस्ट सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स. क्योंकि इंस्टाग्राम में तो क्या है, अभी जैसे मान लो मैंने आपको फॉलो कर लिया, लेकिन मैंने आपकी कोई फोटो आके ऐसे लाइक नहीं करी कायदे से, तो 1-2 हफ्ता तो मुझे इंस्टाग्राम आपके वो फीड में दिखाएगा कि वर्षा ने ये पोस्ट करा है. उसके बाद वो दिखाना ही छोड़ देगा, क्योंकि मैं एंगेज ही नहीं कर रही हूँ आपके कंटेंट के साथ. मैं बता तो नहीं हूँ, 49,000 पीपल फॉलो करते हैं मुझे, मुश्किल से 400 लोग उसको आके लाइक करते हैं. लेकिन 400 लोग तो मेरे न्यूज़लेटर में ही है, राइट? दोज आर ईमेल आईडीज दैट आई हैव. और उस ईमेल आईडी से ना फिर आप फेसबुक से अगर आप एड्स डालो, आई डोंट नो, कैन थेरेपिस्ट यूज एड्स? आई हैव नो आइडिया. या दे कैन. हाँ, तो आप फेसबुक मुझे काफी बार आता है कि एड यूज कर सकते हैं.
हाँ, तो फेसबुक से जब आप एड यूज करोगे तो उसमें जब आप एड की टारगेटिंग करोगे तो आप फिर उन ईमेल आईडीज को यूज कर सकते हो गुड टारगेटिंग के लिए। सी, इंस्टाग्राम में कौन आपकी फोटो आके लाइक कर रहा है आपको नहीं मालूम है, लेकिन अगर आपके न्यूज़लेटर के सब्सक्राइबर्स हैं आपको एक्चुअली पता है कि ये लोग कौन है, उनका क्या नाम है, ईमेल आईडी है। सो देयर इज दैट यूज ऑल्सो ऑफ हैविंग ईमेल आईडीज कि आप अपने एड्स की टारगेटिंग अच्छी कर सकते हो। एंड धीरे धीरे ही फैलता है। लाइक मेरे भी जो मोस्ट ऑफ माई कस्टमर्स आर Delhi, Gurgaon, maximum Bombay based because I am based in Gurgaon. But I also have customers like Canada से मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने मेरे ब्रूचेस ऑर्डर करे हैं, कैप ऑर्डर करी है, महंगा सामान ऑर्डर करा है। तो और फिर वो अपने दोस्तों से मिलती हैं तो और 10 लोगों को बताती हैं कि अरे ये देखो कितना सुंदर काम है या जो भी। तो ये धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता है। फिर सिंगापुर में कोई है, इटली में कोई है, दिल्ली वाले लोग आपस में मिलके बात करते हैं कि अरे बड़ा सुंदर ब्रूच पहना है, कहाँ से लिया, स्टफ लाइक दैट। तो इट टेक्स टाइम टू बिल्ड इट यार। और अभी तो आपने इंस्टाग्राम अकाउंट कब बनाया था? 18। हाँ, तो 2 I years। was not regular then. हाँ, तो मैं that's what I'm 19 saying। से ज्यादा रेगुलर। रेगुलरली करो तो टाइम लगता है। एंड लुक एट व्हाट अदर थेरेपिस्ट्स आर आल्सो डूइंग जस्ट टू सी कि ऑप्शंस क्या हैं। जरूरी नहीं है कि आपको भी वही करना है, जिस चीज से आप कंफर्टेबल हो। फिर कीप डूइंग पोल्स इन योर स्टोरीज एंड आस्क योर फॉलोअर्स कि भाई आपको किस टाइप का कंटेंट पसंद है। फिर वो वाला ट्राई करके देखो, क्योंकि कई बार फीडबैक आपको बड़ा अच्छा मिलता है और फिर आप एक्चुअली कंटेंट बनाते हैं तो उसको कोई लाइक नहीं करता है। तो बोलने के लिए तो लोग यस नो पोल में काफी करते हैं, बट सो सी एन एक्सपेरिमेंट, बट यस यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। एंड और वीडियो बनाओ। वीडियो में स्पेशली आपके प्रोफेशन में आई थिंक बहुत ज्यादा वैल्यू है कंपेयर टू अ स्टैटिक पोस्ट। हाँ, मैं देखती हूँ, मैं जब वीडियोस कोई भी डालती हूँ वो सबसे ज्यादा शेयर होते हैं और सेव्ड भी होते हैं। बिल्कुल, जितने कोट्स नहीं होते हैं। पीपल लाइक वीडियो। मैंने पता है बीच में एक वीडियो सीरीज शुरू करी थी, स्टोरीज पे डालती थी मैं। और सुबह सुबह उठ के ना मैं जैसे कॉफी पीती हूँ, भी लिखा हाय कॉफी चीयर्स, अलग अलग ग्लास में कॉफी डाल के पीती थी। वो मैंने बीच में डालना बंद कर दिया बिकॉज आई रैन आउट ऑफ ग्लासेस। एवरी ग्लास आई ड्रैंक, लाइक वाइन ग्लास में भी पी लिया था, बियर ग्लास में भी पी लिया था, तो मैंने बंद कर दिया डालना। सडनली मेरे को एक हफ्ते बाद डीएम आ रहे हैं, ओ आई मिस योर कॉफी चीयर्स। मैंने कहा है you don't know people are deriving value from what। लोगों को अच्छा लग रहा था देखना, तो अभी मैंने बीच बीच में फिर डालना शुरू कर दिया। एंगेजमेंट ज्यादा होती है उसमें फॉर श्योर, मुझे भी अच्छा लगता है करना। And I like the energy on your face when you do coffee cheers। वो energy इतनी अच्छी होती है ना कि ठीक है, however your days, but किसको face पता था, energy बहुत अच्छी होती है। किसको पता था कि ये भी होगा। मैंने तो ऐसे ही किया क्योंकि मैं पीती हूँ कॉफी अजीब अजीब ग्लासेस में। मैंने कहा चलो इसका भी वीडियो बना देते हैं। यू नेवर नो व्हाट वर्क्स या विद द ऑडियंस। And your stories are really interesting। थैंक यू सो मच। गुड, नाइस, दिस वाज नाइस, वेरी काइंड ऑफ यू। बड़ा मजा आया आपसे बात करके। सेम ईयर। और मुझे ये काफी अच्छा लगा विच यू सजेस्टेड, मंडे टू सैटरडे जो करना है। हाँ, मैंने काफी सारे बाहर के भी थेरेपिस्ट देखे हैं, फॉरेन के भी, पर इतना डिफरेंटली नहीं कर रहे हैं। उनका भी एक सेम पैटर्न चलता रहता है। हाँ, ये स्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे हम लोग जब पहले टीवी देखते थे ना, तो हमें पता था मंडे को कौन सा सीरियल कितने बजे आता है, ट्यूसडे को कौन सा कितने बजे आता है, एंड वेट करते थे कि हमें ये चाहिए, हमें देखना है, मिस नहीं होना चाहिए। So kind of that is what also works, especially अगर आप पहले से प्लान करो तो ये करना बहुत आसान है। लेकिन आप मेरी तरह अगर रोज सुबह उठ के कि शिट आज क्या पोस्ट करना है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। पर मेरा भी अभी जैसे स्ट्रक्चर ना, मंडे को मैं करती हूँ नैनाज मंडे आस्क मी एनीथिंग, वो स्टोरीज में होता है। एंड देन ट्यूसडे को मैं उसका वीडियो पोस्ट करती हूँ, ब्लॉग पे जाता है, आईजीटीवी आता है, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेरे ब्लॉग पे भी पिछले कुछ 2 हफ्ते से प्रॉब्लम चल रही थी, तो न्यूज़लेटर नहीं गई है लोगों के पास, तो मुझे ईमेल आ रहा है कि अरे आपका वो नैना आस्क मी एनीथिंग क्यों नहीं आया। So it shows that people are actually looking at that stuff। और ये फीडबैक है एक तौर का। अगर आपको ऐसा फीडबैक मिल रहा है तो आपको उस पर और काम करना चाहिए। राइट। बट हाँ, कंसिस्टेंटली तो डालो और फिर बढ़ेगा पेज आपका, 100% बढ़ेगा और क्लाइंट मिलेंगे। इंडिया में थेरेपी के बारे में और लोग बात कर रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं, और दे वांट टू नो कि हम अपनी तबीयत कैसे ठीक करें। बिकॉज हम आपस में तो बात करते नहीं है, तो किसी प्रोफेशनल के पास ही चले जाओ। तो ये बढ़ रहा है फॉर श्योर। तो अगर आप अभी से इसमें एफर्ट डालोगे तो बहुत आपके ग्रोथ के चांसेस हैं। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो करें। आपके पास और कोई क्वेश्चन है? नहीं, काइंड ऑफ, बट आपने टेकवानी थेरेपिस्ट काफी बार यूज किया, तो आई एम काइंड ऑफ मोर कन्विंस्ड कि मैं वो नाम यूज करूंगी। टेकवानी थेरेपिस्ट, वो जो नोटपैड फाइल है नोट्स वाली, उसमें ऑप्शंस है, वो मैं आपको अभी भेज दूंगी, ईमेल कर दूंगी। बट हाँ, आप डेफिनेटली हैंडल तो आप चेंज करो जो भी है, और उसकी स्पेलिंग ठीक करो प्लीज, वो इनिशियल की भी उसके अंदर, ठीक है ना? I haven't noticed it, yeah. Okay, cool. बाकी if you have any questions, you can always respond on email, and कुछ होगा तो I'll be more than happy to answer on that. ठीक है? Yeah.
चलो I had amazing time talking to you, Naina. Awesome, yeah. Thank you so much. Thank you very much. बड़ा मजा आया बात करके. I was really looking forward to doing this with a therapist because I think it is the need of the hour. हम सब लोगों को स्कूल में सिखाना चाहिए कि मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट के जाने में कोई शर्म नहीं है. अच्छी बात है, आप अपनी तबीयत ठीक कर रहे हो. पर ये किसी ने स्कूल में तो सिखाया नहीं, तो चलो देर आए दुरुस्त है. So I was very happy when I saw your name on the newsletter and I was like, इसको, you know, profile also I can see you need a little bit of help. So I was like very happy to like do it with you. Thank you. Thank you. All right, Varsha. Nice talking to you. Bye. Bye. Take care. Bye.